अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्रिकेट क्लिनिक के साथ आसिफ, साइम और मुदस्सिर हाजिर हैं एक दफ़ा फिर। अम, आपके सामने ही है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का सफ़र अख्ताम हो चुका है। There are no two ways to put this, but this has been a very shameful, embarrassing, some would say humiliating exit. कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट राउंड में ही हम बाहर हो जाएंगे। एटलीस्ट एज पाकिस्तानी फैंस यू आर एक्सपेक्टिंग के नेक्स्ट राउंड में तो जाएंगे, एंड इफ वी प्ले वेल हु नोज हम सेमीफाइनल के लिए भी हम क्वालिफाई कर जाएं। बट टू लूज टू यूएसए, टू लूज टू इंडिया, गेम अगेन वी शुड हैव वन। और उसके बाद फिर जो बारिश का सिलसिला हो गया आयरलैंड वर्सेस यूएसए का, उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली दिस इज वे वी आर, हमारा सफर अख्ताम हुआ। तो इस एपिसोड के अंदर हम ओवरऑल जायजा लेंगे और बात करेंगे क्विकली हमारी ओपिनियन में वेयर वी वेंट रॉन्ग। बहुत ज्यादा लंबा इसमें डिग नहीं करेंगे। विल क्विकली गो थ्रू व्हाट इन आवर ओपिनियन वर्स द की फैक्टर्स व्हिच लेड टू आवर डिमाइस, और उसके बाद फिर हम इंडिविजुअल प्लेयर्स के एनालिसिस करेंगे और इंडिविजुअल फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग के ऊपर तबसरा करेंगे। अगेन जो होना था वो तो हो गया, बट इस सब को करने का एक मकसद ये भी है कि आगे भी हमारे टूर्नामेंट्स आने हैं। वी हैव द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी कमिंग अप इन पाकिस्तान, होपफुली स्टेज इन पाकिस्तान। उसके बाद फिर हमारे 2026 में फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप होगा। तो वे डू वी गो फ्रॉम हेयर? मेन चीज है कि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन क्या हम कर सकते हैं कि हमारी ट्रेजेक्ट्री एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। स्टार्ट करते हैं। आसिफ, आप बात करना चाहोगे? आप व्हाई डोंट यू गिव अस 2 to 3 minutes ऑफ योर टेक ऑन वेयर वी वेंट रॉन्ग? Yeah, assalamu alaikum. So look, we are all Pakistan fans. We know that. And there are going to be times when we can be positive. You remember we were eliminated early in the 2007 World Cup in the West Indies, and then we won the 2009 T20 World Cup. So it's always darkness before the dawn. And so there are going to be times when we can talk positively. There are going to be times we can say, what is the direction forward? There are going to be times we can put the pieces together, build up some optimism, and talk about all of that. I'm going to say right now that time is not now for us. We are all big fans of Pakistan. We put so many hopes and dreams and really had some expectations. Even though it was a low bar, we had some expectations and they fell woefully short. So I just want to say, if you're a Pakistan fan, if you're upset with the Pakistan team, we're here for you. This is a safe space. Today, we are here to vent. We are here to hold our players that we put many hopes on, to hold them accountable. And so there's so many things you can say as why we failed. And I'm not going to talk about all of that right now, but very, very quickly, I said very early on in this show that is PSL any true barometer for how players perform in international cricket? I was challenged when I said the player of the tournament for PSL, Shadab, should not be in the 11. And, I think that has borne out. Preparation, we all talked about this before. We were, preparing for pitches in the USA. We know that it was going to be challenging. Playing in England, where it did not resemble anything like those conditions, did not help. Being the last team to arrive, having no practice matches, doing fundraisers at massages, doing late night dinners at Bandu Khan, and then they actually turned down the practices. There were times when they could have practiced, they chose not to practice. One thing that I found to be very, very shocking is a lack of poise. You play inexperienced teams. We're an experienced team. This is such an experienced team that was in the finals just 2 years ago. And you see this in all sports, whether it's tennis or basketball or baseball or anything, that you go neck and neck. But when it really gets crunch time, the experience, the skill raises you to another level. And with this Pakistan team, it was the opposite. It almost looked like the USA was the experienced team. We were the inexperienced team. The chase against India, where 99 times out of 100, we should have done that easily. And we fell apart when it really became crunch time. The super over, even beating Canada and Ireland, we didn't win those convincingly. We barely, crawled over the finish line. So that's something that was very shocking to me. And I think part of that comes from a lack of leadership. I know we'll talk about Babar, but, a captain is not just someone who performs. It's someone who brings out the best in their players. We've seen many players who were lesser than Babar, but did that very well for Pakistan in the past. I won't name them now. We already know. And you want the output to be greater than the sum of the individual parts. Babar was missing in action for a lot of really crunch times, and I think that hurt us. All of these things coming together, it's a snowball effect. All of this was predictable, unfortunately.
selection. You have what, 5 openers in your team. You don't have a middle order that you select. So these are all things that finally it was a perfect storm came together. Look, we reached the finals 2 years ago, but let's not forget there was a talk that we had here on this show about divine intervention. We needed Bangladesh to win their match. We needed the Netherlands to beat South Africa. Only then were we able to advance. Maybe what we saw leading up to that when we lost to Zimbabwe is a truer measure of where we are as a team rather than the team that then got hot and went to the finals. There are a lot of questions that need to be answered, and hopefully they'll answer them in the near future. बिल्कुल सही। मुदस्सिर, आप कुछ ऐड करना चाहो? आसिफ ने बहुत सारे फैक्टर्स को क्विकली रिकैप किया है। कोई और चीजें जो आपके जहन में आती हो? नहीं यार, अभी ओडीआई वर्ल्ड कप और इसमें जो ट्रेजेक्टरी थी, इट्स प्रीटी सिमिलर। वही फ्लॉज हैं जो स्टर्बन कैप्टनसी, टीम सिलेक्शन एंड मैन मैनेजमेंट की के वो उसको अब्रार अभी तक बैठा हुआ है ना ओडीआई वर्ल्ड कप से, 2 T20 खेले में उसने अभी तक। फिर इससे अच्छा तो सिचुएशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि फ्लैट अगर पिच पे वर्ल्ड कप पूरा होता है, जैसे इंडिया में अगर फ्लैट कंडीशंस हो तो पाकिस्तान का चांस था ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि द टीम इज डिजाइन टू स्कोर 160 180। इससे अच्छा क्या वर्ल्ड कप होता है कि इंडिया से आप खेल रहे हो, बारिश हो रही है, फिर आपकी बैटिंग में लाइट पूरा सूरज चमक रहा है, एक रन पर बॉल्स फिर रन करने हैं। मतलब इस टीम में ये तो था कि कंसिस्टेंटली कम से कम ये लोग 150 60 तो कर जाते थे ना। तो डिसअपॉइंटिंग है कि लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप में भी उस बेहतर खेल सकते थे। तो मेन फ्लॉ वही है कि जब तक वो हमने ओडीआई वर्ल्ड कप से नहीं कोई चीज़ करेक्ट नहीं हुई हमारी कैप्टनसी में, स्ट्रेटेजी में, और वही पुराना प्रॉब्लम जो मिडिल ऑर्डर में हो रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें बार बार प्रॉब्लम हो रही है। और टीम अच्छा नहीं खेली यार। क्रंच, जैसे आसिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू एलिवेट द गेम। तो जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं गेम में रहते से, इंडिया वाले गेम में जैसे ही रिजवान आउट हुआ है उस वक्त तक गेम बन सकता था पाकिस्तान का, मगर तो उसकी आई थिंक ही स्कोर्ड 30 समथिंग इन 40 बॉल्स, तो वो ज्यादा ही स्लो खेल के वो रन 75 उसकी स्ट्राइक 31 and 44 balls. एग्जैक्टली। पहले गेम में देखो यूएसए वाले में प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई है कि डेलिस में गेम था 159 किया, रन ही अंडर, मतलब अपने सब पार स्कोर कर दिया ना, 15-20 रन से कम थे। एग्जैक्टली। बाबर ने किए 43 बॉलर पे 44। तो अगर आप खुल के नहीं खेल रहे या डर रहे हो, मुझे नहीं पता डर किस चीज का था, तो टीम जैसी भी थी उसने अपने पोटेंशियल भी परफॉर्म नहीं किया एक्चुअली। तो खैर चलो और बात करते हैं, मगर ये कि देखें अब आगे। हाँ नहीं, मैं आपकी सारी फैक्टर से एग्री करूंगा। एक दो चीजें और मैं ऐड करना चाहूँ कि दिस इज अ गेम ऑफ मोमेंटम, कि जिस तरह अगर एक टीम मोमेंटम में हो, जिस तरह अभी वेस्ट इंडीज हमें लग रही है, आज देखते हैं कैसे करते हैं वो इंग्लैंड, बट दे वन 8 गेम्स ऑन अ ट्रॉट। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली 2021 के बाद से वेयर हमारा जो विन रेट वाज अबाउट 75%, 2022 में it came down to about 50% and 2023 में it's almost 30%। सो जब इतना कम आपका विन रेशो हो और आपने अपने होम कंडीशंस के अंदर भी न्यूजीलैंड की बी और सी टीम को ना हरा सके हो, तो एक वो कॉन्फिडेंस नहीं होता आपके अंदर। आप अगर विनिंग पोजीशन में भी हो तो आपके जहन में डर होता है कि यार कहीं हार ही ना जाए। और वही मुझे लगा कि यूएसए की टीम के अंदर भी द मोमेंट, आपको याद होगा कि जिस तरह स्लिप के अंदर एक बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा रिजवान का, उसके बाद से हम इतना बैकफुट पे आ गए, इतना बैकफुट पे आ गए। अगर आप देखें कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या कोई ऐसी टीम हमारी जगह होती, एक दो विकेटें गिर भी जाती, तो उनके जो नीचे आने वाले प्लेयर्स हैं दे वुड हैव प्लेड द नेचुरल गेम और वो यूएसए को वापस गेम में ना आने देते। बट हमारा ये है कि चूंकि वो इतनी हम अनफॉर्चुनेटली हारे हुए इन द पास्ट। मैं तो इवन जब कनाडा की गेम देख रहा था एंड वी वर ओनली चेजिंग व्हाट 105 और सो, मुझे तो उसमें डर लगा हुआ था कि यार ये जब एक दो विकेटें गिरी थी कि पता नहीं ये भी चेज होता है कि नहीं। इसी तरह आयरलैंड वाली गेम के अंदर हालांकि वो डेड रबर था, तो वो इतना हारने के बाद कंसिस्टेंटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगा बहुत, स्पेशली बैटिंग के अंदर। आई थिंक ओवरऑल हम इंडिविजुअल भी डिपार्टमेंट्स की बात कर लेंगे, बिग पिक्चर में देखूं तो बॉलर्स स्टिल did a reasonably good job, barring the USA game where I felt that they should have been able to defend 155, but बाकी गेम्स के अंदर the bowlers did their job। I thought आयरलैंड वाली गेम तो मैंने खुद देखी थी लाइव, तो लग रहा था कि जान मार रहे थे, स्विंग भी मिल रहा था, पावर प्ले के अंदर बिल्कुल डेसिमेट कर दिया था आयरलैंड को। बट बैटिंग के अंदर स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर है वो कंप्लीटली आउट ऑफ सॉर्ट्स लगा, और वही था कि एक दो विकेटें गिरती थी
तो बिल्कुल पीछे से लगता था कि यार आप तो बिल्कुल गए। तो ये सारी चीजें हैं, और आई एग्री विद आसिफ के देर से आना यहाँ पे, लास्ट टू कम हेयर, वो सारी चीजें, लैक ऑफ प्रैक्टिस, कंडीशंस का ना पता होना। एक चीज मैं ऐड जरूर करना चाहूंगा जो आप लोगों ने किसी ने बात नहीं की। ये सारी हम क्रिटिसिज्म कर लें पाकिस्तान की, आई स्टिल जब मैं देखता हूं तो आई एम वेरी एंग्री विद द रोल ऑफ द आईसीसी, इन द सेंस कि उनको पता है कि फ्लोरिडा के अंदर ये हरिकेन सीजन है। Not only did they schedule the games there during the hurricane season, but 10 days leading up to the Ireland versus USA game and the Pakistan versus Ireland game, 10 दिन पहले से पता था कि यहाँ पे हरिकेन आ रही है, यहाँ पे बारिशें होंगी, और रिकॉर्ड बारिशें होंगी। और कोई उसके बारे में उन्होंने उसकी मैनेजमेंट नहीं की। आई मीन फॉर मी दिस इज शॉकिंग, दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि वर्ल्ड कप की गेम हो रही हो, और द डे ऑफ द यूएसए वर्सेस आयरलैंड गेम, इट इज सनी एज एनीथिंग, देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ रेन, बट 4 days लीडिंग अप टू इट जब बारिशें होती रही एंड देयर वाज नो कवर, आपने ग्राउंड को खुला छोड़ दिया, वहां पे पडल्स बन गए। तो आई मीन दिस इज नॉट टू से आई एम नॉट डिफेंडिंग पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम आप मैं एग्री करता हूँ, बट ये कोई बात नहीं है कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हो और आपने उसको इस तरीके से मिसमैनेज किया है कि आपने बारिशें होने दी, और या तो ऑन द डे ऑफ द गेम बारिश हो रही हो तो आप कहो कि यार ये तो चांस की बात है, जिस तरह इंग्लैंड वर्सेस नामीबिया के गेम के अंदर बारिश हो गई थी, उसमें आप कह सकते हैं यार ये बारिश का तो किसी को कुछ नहीं पता। बट ये तो वो चीज नहीं थी, ये तो आपको पता था कि बारिशें हो रही हैं, यू लेट इट बी, आपने कोई इंतजाम नहीं किया, कोई आपने कवर्स नहीं मंगवाए। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई थिंक शुड आल्सो बी लुक्ड इनटू। They won't look into it. कुछ और आप बात करना चाहेंगे इसमें, या शुड वी मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द? I mean, that's there. You remember the 92 World Cup, which we won, weather actually helped us in the match against England when we were 74 all out. Part of this is that the tournament was delayed because of the IPL extending so far. We know that. But look, for me, two things about this. One is we should not have been in this position. I know you can say it's a different thing to talk about. Had we taken care of business against the USA, it wouldn't have mattered. Right. And the other thing is there's no clear, based on what we've seen, I think USA had a very good chance of beating Ireland. They've beaten them before. So even had they let the match come to fruition and had them play, it might have still not given us the result. The bottom line एटलीस्ट क्लोजर मिलता ना यार, एज अ फैन मुझे क्लोजर मिलता कि जी ठीक है, दे डिजर्व इट। अभी मुझे है कि आई डोंट थिंक दे आर अ बेटर टीम देन अस। Yeah, but we're too good of a team, exactly, in this pool to be depending on other results. This is our own fault. We screwed. That Super Over was a microcosm of Pakistan cricket for the last 3 years. I cannot get over what an absolute shit show that was. I'm sorry to use language, but it was just complete falling apart. And it was exactly what Pakistan cricket has been. I was exasperated watching that, and I think it summarizes everything about Pakistan cricket. For that, we सुपर ओवर तक तो बात ही नहीं आनी bent चाहिए over थी and व्हेन यू smacked वर on the 12 butt. रन्स। जब 12 रन्स आपके रह गए थे 3 बॉलों पे, तो सुपर ओवर की तो बात ही नहीं आनी चाहिए थी। You should Exactly. be able Yeah. to 9 times out So of 10 you should be able to defend that, I right? feel the thing you're saying about the weather, but I think it's our own fault for us having to have even depended on that in the first place. No, I get your point and I'm not Yeah. justifying our performance. Yeah. मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि फिर उस केस के अंदर the first 2 games then become critical, right? Yeah. तो फिर आप कह दें कि यार first 2 games फिर हम उस एंगल से खेलें। हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गए ना कि यार 4 गेम्स हैं एंड वी हैव अ वे ऑफ कमिंग बैक, बट इन दिस केस वी हैड नो वे ऑफ कमिंग बैक, क्योंकि गेम वॉश आउट हो गया आयरलैंड यूएसए की, उनको 1 पॉइंट मिल गया। But we वो had चीज no है कि business losing those first 2 games. Yeah. Those first 2 games, had we taken care of, even performed at 50% of what we're capable of doing, we would have won those games and we would have sat back and enjoyed the weather. पर एक चीज थी कि ये कोई क्रिकेट में बहुत से लोग इसलिए लोगों ने देखना छोड़ दी थी, यूके में जो ड्रॉज होते हैं टेस्ट मैच में बारिश, तो ये पुरानी प्रॉब्लम है क्रिकेट की। फर्क ये था कि वो इमरजेंसी थी, वहां पे गवर्नर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी। अमेरिका में इट डजंट मेक एनी सेंस। और हमें एक हफ्ते से देख रहे थे वेदर कि इट्स अ डिजास्टर वाज गोइंग ऑन जस्ट क्लोज इन मायामी और ये वो ना। तो पाकिस्तान का मैच है, किसी का भी होता, दे कुड हैव जस्ट चेंज द गेम। मुझे नहीं समझ आया कि क्यों नहीं चेंज हुआ वेन्यू। अच्छा उसकी जस्टिफिकेशन, बाकी टीम को भी फर्क पड़ा जिन गेम्स से, इंडिया कनाडा का भी वॉश आउट हुआ है। उसकी जस्टिफिकेशन ये लोग ये दे रहे थे कि यार देखो जी वो फैंस ने टिकट्स लिए हुए हैं, फैंस ने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, तो वो तो वैसे ही वॉश आउट हो गए 2 गेम्स, तो फैंस तो वैसे ही नहीं देख सके, तो व्हाट इज दिस देन? ये तो फिर मुझे नहीं पता, उसकी कोई सेंस नहीं बनी, गेम को चेंज कर देते। मगर यार चलें, एक बट बार
इंटरेस्टिंग चीज किसी ने बताई है कि जो सुपर ओवर होते हैं ना वो नॉकआउट्स में से शुरू हुआ था। तो कुछ लोग कह रहे हैं, जो मैंने भी कहा था, कि जो 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 ग्रुप गेम में सुपर ओवर की सेंस नहीं थी, वो गेम टाई हो गया था तो पाकिस्तान बच हाँ, तो जाता। एक एक पॉइंट मिलना चाहिए था। हाँ, तो तो सुपर खैर ओवर, वो हाँ तो सुपर रूल्स ओवर जो थे। नॉकआउट्स में होता है। और दूसरा ये कि ये कि हाँ बाकी बारिश से बाकी काम हो गया। खैर, हाँ, अब हाँ। लेट्स मूव चलें, ऑन। वो तो अब हम कुछ नहीं, बट मैं आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस पॉइंट अबाउट हाँ मिसमैनेजमेंट। बारिश ऑन द डे अगर हो जाए मुझे कोई मसला नहीं, वो तो कर्मा है या नेचर या अल्लाह या जो भी आप कहो। बट आप पहले से होती रही है और आपने उसके बारे में कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर नहीं किया, मुझे उससे मसला है। एंड इट्स नॉट जस्ट के आज हमें हो सकता है कल कोई और इसके वजह से आउट हो जाए, तो इसके बारे में आई थिंक कुछ सोचना चाहिए। नहीं, वो इम्पोर्टेंट गेम थे। अगर आयरलैंड 2 जीता तो आयरलैंड का भी चांस था ना। एग्जैक्टली, तो वो अच्छे रन रेट से आयरलैंड जाता वाले भी तो कह उसका भी सकते चांस हैं था। देवर अनलकी टू, तो हो सकता है नासिर की बात ठीक है, हु नोस के यूएसए हरा देता, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। बट एटलीस्ट एज फैंस हमें क्लोजर मिल जाता कि यार ओके दे डिजर्व्ड इट। अभी आई एम नॉट श्योर कि ठीक है, दे सुपर ओवर में हमसे जीत गए, एक बारिश का पॉइंट मिल गया। आप देखोगे आगे कि दे नॉट गोना बी एज कंपेटिटिव। आज ठीक है, एंड के अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर कर लिया, बट मोस्ट लाइकली दे नॉट गोना बी कंपेटिटिव इन देयर पूल। सो डू यू वांट सच टीम्स टू गो थ्रू because बारिश का एक पॉइंट मिल गया and all that? I would say that just based on what we've seen, I think USA is going to put up a far better performance than Pakistan will in this Super 8 round. I just think we are broken, you know. But I don't know. I'm broken. चलें, They वो तो broke हम me. हाइपोथेटिकल बातें हैं, बिकॉज एक और अगर देखें तो पाकिस्तान इज ऑलवेज बीन अ लेट स्टार्टर। एक दफा वो जीतना आए तो बाद में पिकअप भी कर लेते हैं। सो Yeah, अगेन हम कुछ कह नहीं सकते। yeah. कोई देर ऑल कंजेक्चर्स एंड हंचेस एट द मोमेंट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ओवरऑल बिग पिक्चर। आप कितने मार्क्स देंगे? विल स्टार्ट ऑफ विद बैटिंग। मुदस्सिर, आप कितने दोगे आउट ऑफ 10 बैटिंग? ओवरऑल बैटिंग ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग। यार मे बी 3 out of 10। या आई वुड Okay. गिव 2.5 मे बी। या अच्छा, 1। I give 1-0 him a 1. इज फाइन। आई मीन, एक हुआ ये कि देखो लो स्कोरिंग हुआ है। वो एज ए सेट कि इंडिया वाले गेम में भी वो क्रंच में जब टाइम एंड में आया तो उसमें बैठ गए। तो या आई मीन किसी बैटिंग किसी किसी एक गेम के अंदर भी उनकी कन्विंसिंग नहीं थी। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूंगा कि ये जो यूएसए वाली लेग थी वो लो स्कोरिंग गेम थी। सिर्फ मैं या इतना उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दूंगा, या माइनस द डैलस गेम। Yes, but these are experienced cricketers, and when you see conditions are hard, you adjust accordingly. You don't play the big, expansive shots, you know. I mean, this is not hard. You adjust. We all have done this. You adjust according to the conditions, and they're too experienced to have let that go. I think our batting right now is either it'll be a complete failure, or you have Babo or Rizwan bat long, build up to average. Everyone say, look at how many runs they scored, but they bat very slowly. You know, remember Rizwan in the Canada match scored a 50. It was the slowest 50 in T20 history for Pakistan, but he scored it. So it's either those guys batting very slowly or everybody else failing. It was just all a mess. I give it a 1. You know. चलें, ठीक है। हाँ, ज्यादा कोई फर्क नहीं है 1, 2, 2.5 के अंदर, 3 के हाँ. अंदर। बॉलिंग पे आ जाते हैं। कितने देंगे? आसिफ, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। Bowling में I give them a 6. अच्छा, मेरा भी Which 6 ही था। I मुदस्सिर, think आपका? you know the reason I came down. Actually, they bowled reasonably well for the most part. Some of them did really well. Two things which pulled that grade down are the USA match. One, यूएसए गेम। Haris Rauf, that over you've got 12 runs and 4 balls. You've got to defend that. And then the super over, which was the come apart of all come aparts of age. I've never seen a team of this caliber collapse to that extent. Those two things pull it down from like an 8. या यू राइट। ऑल्दो वही बाकी गेम के अंदर, आई मीन जो इंडिया के गेम के अंदर, ऑनेस्टली आई वाजंट Yeah. एक्सपेक्टिंग कि हम उनको Yeah. ऑल आउट कर लेंगे इन Mhm. लेस देन 120। तो दैट वाज ग्रेट परफॉर्मेंस ओवरऑल। Yeah. ठीक है, मुश्किल विकेट थी, बट इंडिया की बैटिंग हम जानते हैं हाँ. कि वो एक दो बंदे भी उनके चल पड़े। हमने किसी को भी मां सवाए पंत के किसी को चलने नहीं दिया था। फिर अगेन कनाडा के गेम के अंदर, आयरलैंड के गेम के अंदर तो मैंने फर्स्ट हैंड देखा था, बहुत Yeah. जबरदस्त, बारिंग वन पार्टनरशिप। सो आई विल गिव देम अ 6 टू। Okay. मुदस्सिर, आप कितने दोगे मार्क्स बॉलिंग को? bowling को, it was a low scoring tournament overall. They were decent, so maybe 6 out of 10. Look at सही है। Mirza being brave and हाँ, सही है, spontaneous. सही है। फील्डिंग की बात कर लेते हैं। फील्डिंग
Fielding, मुदस्सिर आप Mudassir. मुदस्सिर स्टार्ट करना फील्डिंग चाहोगे? फील्डिंग में एवरेज रही है ना फिर फील्डिंग में Yeah, I would give it somewhere between six फोर and six या and रियली two. Yeah, maybe four. फोर Asif, फॉर आपके you 4, फाइव 5, yeah. 5. Yeah, up yeah it wasn't horrible, but the most important catch of the entire tournament was Shaheen Afridi dropping that catch in the last over when Hadassov was bowling. They would not have been a super over if he had taken that catch. So it's not just taking catches, it's taking important catches. Ground fielding was okay. It wasn't great. It wasn't terrible. It could have been worse, but it wasn't great. उसी गेम के अंदर वो जो हमने 22 के रन दिए हैं वो वाइट के Yes. ऊपर, वो वाइट तो हो ही रही है, 22 हो रहे हैं, ओवरथ्रोज हो रहे हैं. That was a joke. इवन इंडिया के गेम के अंदर पंत को हमने 2-3 चांसेस दिए हैं, राइट, Yes. एंड देन ही मेड लाइक 50 ऑड. और Difficult फिर chances, एंड के but अंदर भी chances nonetheless. बिल्कुल. या वी गेव देम चांसेस. ये जो आखिरी जो पार्टनरशिप थी, हम अगर वो एक दो एक्स्ट्रास वगैरह हमने कुछ एक्स्ट्रा दे दिए, हम 110 तक भी उनको ला सकते थे. 105 110 तक भी एक स्टेज बन रही थी कि शायद इंडिया को ऑल आउट कर देते. सो या आई मीन कोई ऐसी वो चीज नहीं है. माइनस द शाहीन का मैं आई एग्री विद यू कि ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट कैच उसने ड्रॉप किया, बट अगेन बात वही है कि उसके बावजूद भी वो रन एक ही बना था. वो ठीक है, वो बंदा सर्वाइव कर गया. हाँ. और उसने एंड में आके एक छक्का मार दिया, बट वी स्टिल नीडेड टू डिफेंड 12 of 3. But we So would have won by 1 run. we could have, but again वो जो आखिरी चौका मारा है वो उस बैट्समैन ने नहीं, जोन्स ने नहीं मारा, वो दूसरे हाँ. बंदे ने मारा है. हाँ. तो उसका एक छक्का में एक्स्ट्रा पड़ गया, जो ना पड़ता. बट अगेन वी डोंट नो, बट हाँ इम्पैक्ट तो था उस कैच ड्रॉप का. बट उस तरह का कोई मोमेंट नहीं मुझे याद है जिस तरह उसामा मीर ने जिस तरह ड्रॉप किया था सिटर, कुछ इस तरह की वो चीज नहीं थी. तो अगेन 4 और 5. राहत अली जो था. कैप्टनसी के कितने नंबर देंगे आप? आसिफ, आप स्टार्ट करना चाहोगे? 5. 5. ये तो बहुत ज्यादा दे. Yeah, so I will say this. देखो, I think against India, one of the big issues we had with Babar was his management of the bowlers. I think against India and Canada and Ireland, he was actually very good with his bowling changes. The bowlers did their job and everything. Where I really take issue with Babar, first and foremost, is the playing 11. Yeah. The dropping of abroad is unforgivable. It is absolutely unforgivable on these pitches where the ball's spinning. He has some say in that. He had to put his little buddy, his God knows what buddy, Shadab, in there. So that is, and then Yes, but spinning pitches तो नहीं थी, ये तो fast bowlers को सूट नहीं कर रही थी. I didn't see New York wali pitch was a fast bowler's paradise, right? I think there, but when you talk about the Canada match, the Ireland match, even I US think match. slower bowlers had an upper hand, and you have this mystery bowler. Even India ke khilaf, Imad bowled well, and you have this bowler that they've never seen before. It's a mystery, a complete mystery. My other thing about Babar's captaincy that really I think was the crux of the whole tournament for me was that super over. He was missing in action when things were going south, when their overthrows going. Babar was nowhere to be seen. I don't even remember seeing him on TV. I don't know. He was totally missing in action. Amir was running the show. It was all falling apart. A captain has to pull the team together and get things going. Plus, you're the #1 batsman in the world. You're supposed to be the one they all call king. You're the highest ranked batsman. Step up and go and bat in the super over. Why are you hiding behind other people? I think his confidence or lack thereof in his own ability to lead and his own ability to score in a way that wins matches for us, it really showed. So 5 is generous, but I'm giving him 5 because I do think he managed the bowlers a lot better than he has in the past. चले मिर्जा, आपसे भी पूछते हैं. आप प्रॉब्ली आप की बातों से लग रहा था आप कम नंबर दोगे. मैं प्रॉब्ली एग्री करूंगा आसिफ के साथ. मुझे जो इतनी कोई मेजर ब्लंडर्स नजर नहीं आई. एक चीज जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, मे बी यू गाइस हैव एन आंसर फॉर दैट. जो यूएसए के अगेंस्ट जो आखिरी बॉल थी, जब उनको 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 4 to tie the game, why didn't we have a long off? Why was the fielder standing at mid off? कि mid off के ऊपर से उसने मारा है और वो चौका हो गया है. So don't we have like 5 fielders at that stage? Aren't we allowed 5 fielders? And if there are 5 fielders, why didn't we have a long off? 3, 4, 5. So we actually talked about this with some other friends, some of our loyal viewers, and we knew that the length they're bowling is full, right? They're trying to bowl Yorker length to low full tosses, right? So you have 5 fielders out of the circle. For that, you have to have a third man and a fine leg. What the heck? Because an edge can go for 4, right? Yeah. The boundaries on the sweeper and deep square leg were short. So I think they wanted to cover those in case it ended up being a low full toss. He could,
flick it or play it on the offside. So then the question is, do you have a long on or do you have a long off, right? And I think the big problem is that the line was not reliable, right? We weren't sure which way to go. What someone brought up to us and is noticeable is that there was a match not too long ago where Pakistan lost on a ball that was, I think it was on the legs and went down to fine leg or something of that nature. They were trying to keep it on the legs. And the thought was that if it connects, your long on will be better suited. I probably would have had a long off, but that's easy to say in retrospect. But you could not have had both a long on and a long off when you're bowling at that length. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप कैच ड्रॉप की बात कर रहे हो, जो अफरीदी ने ड्रॉप किया था, वो भी मिड ऑफ पे ही खड़ा हुआ था, सर्कल पे ही था, और वो अगर उससे इवन चौका हो सकता था, थोड़ी सी उससे ऊपर चली जाती, तो वो तो ठीक है, उसने कैच ड्रॉप हुआ, बट आपको पता चल रहा था कि यार ये 3 रन और एक्स्ट्रा भी हो सकते थे. So yeah, I think their thought was bowl it more on the legs because this is the guy who I think had not hit a boundary before this, right? Yeah. And they did not want to give him an opportunity to extend his arms and go offside. They thought maybe if you stay on middle and leg, it's much harder. You cramp him for room. It's harder for him to take it to the boundary. That's the only logic I can think of, सही. मुदस्सिर, आप कुछ ऐड करना चाहोगे या हम प्लेयर रेटिंग्स पे आ जाएं? यार वो स्ट्रेटेजी से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो मेरा तो नंबर नहीं है. आई थिंक 2 out of 10 जो भी है. आई एम नॉट. अच्छा. डू यू हैव एन ऑल्टरनेटिव? दोस्तों, आपने बात कर ही ली है. डू यू हैव एन ऑल्टरनेटिव गोइंग फॉरवर्ड के बाबर, अगर डू यू सी हिम एज अ लॉन्ग टर्म कैप्टन? यार वो एक अगेन इट्स अ बिग डिबेट, बट बिग पिक्चर क्या अगर आप कहोगे? आई थिंक ही शुड बी सेटिस्फाइड कि 4 साल, मुझे नहीं पता वो सोच क्या रहा है. आई मीन he had a good chance to have a break at least 1-2 साल कम से कम, और if he gets his peak batting back and अगर नहीं चली सही तो then he can always come back. ये मेरा नहीं ख्याल it was a good, वो जैसे like decision to come back, वो जैसे ही आया फिर वही डीजा वो है ना, वही ओडीआई वर्ल्ड कप का वही chaos शुरू हो गया. तो मेरे ख्याल से उसको फायदा नहीं हुआ, उसको नुकसान ही हुआ बाबर को. ये सेकंड उसका बहुत जल्दी आ गया. आयरलैंड के गेम के अंदर अफरीदी जो था वो थर्ड मैन पे खड़ा हुआ था, तो वो बिल्कुल हमारे सामने था, तो वो लोगों ने चैंट करना शुरू कर दिया, अफरीदी कैप्टनसी मिले भी तो नहीं लेना. वो पीछे मुड़ के कहता है अच्छा नहीं लेना मैंने. तो लगता है कि उसको भी शायद शौक नहीं है. तो फिर क्या आपके पास फिर रिजवान का ऑप्शन बच जाता है या क्या? डू यू हैव एनी अदर अल्टरनेटिव? क्योंकि शादाब की तो जगह नहीं है पक्की. सो फिर ले दे के रिजवान ही रह जाता है आपके पास. और शायद गो विद रिजवान, मगर ये कि आइडियली तो, क्योंकि जो ग्रुपिंग की वैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आइडियली जैसे टेस्ट में किया है इन्होंने, अब मैं नहीं कह रहा शान को T20 का बनाया कैप्टन, आइडियली इन चारों के अलावा बाबर, शाहीन और रिजवान और शादाब, इन चारों के अलावा कोई कैप्टन होना चाहिए. तो टीम आई थिंक शान मसूद है आपके पास. नहीं, मगर वो T20 में खिलाया नहीं ना उसको, तो वो पिछले वर्ल्ड कप में खिलाया था वैसे. He didn't do that bad actually. वो उसका ओडीआई था स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट. T20 में उसने पीएसएल में भी रन नहीं किए, तो आई एम नॉट श्योर, मगर ओडीआई ही कुड हैव प्लेड, उसको ट्राई नहीं किया प्लेयर में. I think the biggest thing, changing the captain so quickly back and forth really damaged the psyche of this team. I think the PCB may go extreme. I don't know if you remember decades ago in New Zealand, they were like this, and they brought this guy, Lee German, who had never played, and just brought him in and made him captain. They may go bold and bring in an Abdullah Shafiq or something like that and say, you become captain. You are untainted from all of these influences, something like that. I wouldn't mind something like that. I think you go fresh. Even Rizwan is so closely tethered to the Babar mindset. I think Rizwan is, strategically is a better captain, but he's so tied to Babar that I don't know if it's anything different. लेकिन एटलीस्ट डोमेस्टिक में आपको कैप्टनसी का एक्सपीरियंस तो हो ना. अगर आपने पीएसएल के अंदर भी आपने कैप्टनसी नहीं की हुई, तो फिर आप कैसे पाकिस्तान की टीम को आके ऑल ऑफ अ सडन आप लीड कर सकोगे? तो मेरे लिए तो वही कैंडिडेट्स हैं जो एटलीस्ट पीएसएल की आपकी फ्रेंचाइज को लीड कर चुके हैं. Well, even outside of PSL, what about domestics? I don't know if any of these guys have done in domestics. That's the thing. Ad hoc तो रिजवान को ही बना देंगे और फिर 2 साल रह गए तो शायद चेंज ना करें. मगर आइडियली मैं कह रहा हूँ कि देयर शुड बी अ डिफरेंट कैप्टन. जो डोमेस्टिक कैप्टन है अभी, जो केपीके में तो रिजवान ही था, और दूसरा सिंध अभी काफी अर्से बाद दोबारा जीती है T20, और आई थिंक फाइनल खेली है, तो उसमें
सऊद है मगर सऊद इज नॉट अ पार्ट ऑफ T20. और कौन है? और आपका इमाद वसीम ये है, बट अगेन इमाद बात का तो वसीम, अगेन ट्वाइलाइट ऑफ हिज मगर करियर इमरान था। वसीम तो टेल एंड पे है ना, वो तो उसकी फिटनेस का भी तो ट्वाइलाइट है टेस्ट उसके Talented करियर का। and he's still a very हाँ polarizing figure for Pakistan. या या तो बात नहीं है अभी ने PSL में, या तो किसी यंग कोई कैप्टन आना चाहिए जिस लगे कोई तगड़ा चाहिए। अभी सोशल मीडिया में आई डोंट नो फ्रॉम नोवेयर फखर जमान का नाम अपलोड होना शुरू नहीं हो नहीं, गया, व्हिच आई फाइंड इट वेरी ऑड कि उसका मैंने नाम कहाँ से आना पाकिस्तान शुरू हो पाकिस्तान ए में देखा था शायद, उसने की थी मोहम्मद हारिस, मगर वो भी टीम का पार्ट नहीं है। I गया। आई एम mean, श्योर के taking the name आमिर, of Fakhr Zaman just shows the desperation level या that we have, right? I mean, I या love या Fakhr, but he's old. He's should be nearing the end of his या career, and या he doesn't bat or play with the maturity level of a captain. वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी उसकी नहीं रही अब जो Yeah, एक जमाने yeah, में थी। वो yeah. अच्छा आमिर चले जमाल का एक नाम और, आमिर जमाल का मुझे नहीं पता उसने पाकिस्तान ए या 19 लेवल पे की है, मगर लगता है कि ही somebody who can do that role good, मगर ये कि we have to use अगेन him अगेन टीम domestic. का पहले हिस्सा बने वो। हाँ, चले कुछ टेस्ट हमें सर्किट डोमेस्टिक में भी नहीं है। राइट राइट सो चले एपिसोड को चूंकि वाइंड अप भी करना है, टाइम भी काफी हमने ले लिया, सो अब क्विकली लेट्स डू अ क्विक रेटिंग ऑफ द प्लेयर्स, राइट। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द ओपनर्स। साइम अयूब कितने नंबर देंगे आप? 3? This is very hard for me. Yes. ओके 3। I said three. I think, but I'm not giving up on him. He needs maturity. He needs to learn how to stay at the wicket. Put him in domestic cricket. Make him spend some time या and become a man. लग रहा है कि डबल माइंडेड हो गया ना, उसकी Yeah. नेचुरल गेम हो रही है, यू नो इज टू माइंडेड के यार डिफेंड करता है तो डिफेंड नहीं हो रहा, Hmm. एग्रेशन के लिए जाता है आफ्टर ब्लॉकिंग तो वो नो लुक शॉट उसकी चल नहीं रही, Mhm. तो ही नीड्स चलें Yeah, हाँ जी। you know, he can play around like ground shot भी उसके बहुत जबरदस्त है, cover drive हम्म, cut। मुझे नहीं समझ आ रहा उसको ये क्यों नहीं कह रहा कोई कि भाई ये एक ही शॉट पे आउट हो रहा है वो Yeah. मिड विकेट या डीप पे ना, तो ये हम्म, क्यों नहीं बोल रहा है डोंट गेट आउट ऑन द सेम स्पॉट, एटलीस्ट कहीं और आउट हो यार, वो एक ही तो एक ही ही कैन नो प्ले लुक मिड ब्यूटीफुली विकेट। ऑफ साइड, तो उसको कोई ये बोल दे भाई तुम ग्राउंड शॉट खेल लो, थोड़े बॉल ले लो, तो लगता है उसको बस फेंक दिया कि जाओ जो करना है करो, which is I mean, strange। don't forget the innings he played in the Test match in Australia. अच्छी And इनिंग्स थी that's वहाँ। what gives me hope. And I know it's there, but right, based on this performance, three is या even. माइंडसेट तो आई मीन ठीक है उसका अग्रेसिव है, बट Hmm. या अभी करंट फॉर्म एंड ही नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। रिजवान द अदर ओपनर 5 चार 4। या आई एग्री विद 4, क्योंकि इंडिया वाले गेम में Yes. वो रन पर बॉल भी खेलता तो वी वुड Yes. हैव won that match। So और my biggest thing about और एक और चीज, अगर हाँ वो शॉट किसी नए प्लेयर ने खेला होता ना, वो दोबारा क्रिकेट नहीं खेलता पाकिस्तान के लिए, yes, 100%. जिस बॉल पे देखो, वो I पकड़ गया। his scores, if you look at he was probably him and Bob were probably the most consistent scorers. The absolute turning point in the India match, you cannot bat 14 overs and throw your wicket away like that. This Yeah. was like the inflection point in the 92 final when Wasim Akram came to take a wicket. Pakistan was desperate. There was a partnership going on. India was desperate. They brought in Bumrah. It's one over. Play the over out. And if you play that over out and stay intact, India would have been in panic mode. Yeah. Instead, first ball, premeditated shot, not judging the length. And Rizwan, if you've been in there for 14 overs, you're the one who's going to bring us home. We lost that match, many reasons, but I put और Rizwan उससे पहले आपका कैच भी ड्रॉप हो चुका है बुमराह के, सो Yeah. एक्चुअली यू गॉट अ लाइफलाइन Yeah. बट यू Yeah. नॉट यूटिलाइजिंग दैट। वो ठीक बहुत है ही वो ही इज अ स्मार्ट गाय, और हम तो स्टेडियम में थे तो हम यही कहते यार ये खेल लो, चाहे 1 रन बने 2 रन बने, विकेट मत देना। हाँ जस्ट सर्वाइव दिस, नहीं सारे फैन यही कह रहे थे। वेरी वेरी बिजार, वो ही इज स्मार्टर देन दिस, आई डोंट नो, समझ नहीं आई इस बात। फील्डिंग ऑन द अदर हैंड, सॉरी फील्डिंग कह रहा हूँ, विकेट कीपिंग बारिंग वो जो सुपर ओवर के अंदर से जो मिसहैप्स हुई हैं उसको या आई आई होल्ड हिम अकाउंटेबल, बट Yes. उसके अलावा कोई खास मिसहैप्स मुझे नजर नहीं आई कि भी कोई बहुत कैचेस छोड़े हो या कुछ हो। एटलीस्ट आजम खान से तो बेहतर ही उसकी But those परफॉर्मेंस are रही। two pivotal things, super over and India ka match. But still, या that's why I brought it down to 4. Batting alone, I think he probably deserved Yeah. higher, but those two things brought him down. अच्छा बाबर आजम हाँ, 4। कैसे? 4 इज अ गुड नंबर। 5 मतलब अच्छा आप रिजवान से ज्यादा दे रहे हैं उनको। If you look at the scores, actually, uske 44th here, 13, 33, and 32 not out. It looks a lot better on paper. Yeah. The big thing about Babar is jo hai, a year ago in Australia in the 50 over World Cup, he was getting out the same way, the in-swinger, in-swinger, in-swinger. Isme,
He was getting out the same way where he was trying to run it down to third man. Yeah. And ab dekho the India match again. What did he do? He was running it down to third man and realized there's a slip there and he pulled back, or he just decided to pull back. And when you are At the that last second. indecisive as the captain, that speaks to his mindset completely. You have such low confidence that you're so indecisive. Babar, I think, gets a 5 because of the standard that we expect from him. And this is something I was saying as well. I think this World Cup has shown me I have to recalibrate my expectations of Babar. I thought that he was going to be amongst the greatest of the greats, the Yunus Khan, the Inzamam, the Miadads. Look, maybe we are being unfair to him. I think at the end of the day, he might be remembered as one of the great cricketers like a Salim Malik or an Ijaz Ahmed, but he's not going to be that level. I just think he's not fulfilling his potential, you know? Yeah, अभी कोई इस तरह की उसने रंच गेम के अंदर कोई मैच Yeah. विनिंग जो लास्ट हम याद अभी करते हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसके थी 2019 वर्ल्ड कप 2019 में. Compare that to अभी जो Ireland के खिलाफ था. He was running away from the strike. He was begging Abbas Afridi and Shaheen Afridi to score the runs. I mean, this is not how a leader leads you to a victory. He was, I think if those guys didn't hit sixes, he would have lost it for us. I guess वो स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी भी थी कि यार मैं एंड तक रहूंगा एंड यू गाइस टेक चांसेस. अगर एंड में बिल्कुल वो बात आ जाती कि यू नो आखिर तक एक विकेट रह जाती तो शायद फिर उस वक्त वो फिर परफॉर्म करता Could स्ट्राइक you और imagine aggression Kohli करता. doing that though? I mean, you know, I think नहीं, कोहली Babar ने तो cannot even पहले ही खत्म stand in कर the देना था shade गेम. of Kohli. It's just not. Yeah. Yeah, नहीं, you're right. Azam Khan 0 Yeah. 1. One game though. I gave one, him 1, but then I realized he only played 1 match. Yeah. Right? So Yeah. we are looking at him in the totality of how he did in England. He was terrible. But look, I still Golden say Duck, Golden Duck. I've been one of his biggest proponents. He's massively talented, but you come in that match against USA, you play across the line, play a horrible shot. The guy's been given opportunities. TK, it was just one match in this World Cup, but it's terribly disappointing, but you have to call it like you see it. I give him a 1. नहीं, आजम को मैं पर्सनली मिला भी था आयरलैंड में इत्तेफाक से फोर्ट लॉडरडेल होटल के आगे. तो उससे थोड़ी सी बात भी हुई थी तो उसका ही वाज वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट. उसने कहा यार कि आई एम नॉट इन सो मेनी वर्ड्स ही सेड कि इज नॉट इन अ गुड मेंटल स्पेस. के कहता है मुझे इतनी ट्रोलिंग हुई है मेरे वेट के वजह से, बॉडी शेमिंग, के मैं बिल्कुल यू नो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फोकस. दैट्स एंड आई बिलीव इट. But having said that, I think he should take some responsibility as well. आजकल की दुनिया के अंदर it shouldn't be that hard to lose weight and get fitter. क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर people are going to talk about his weight, people are going to talk about his fitness. और फिर जाहिर है उसके लिए दूसरा मसला ये है कि he is the son of मोइन खान. तो आपको पता है थोड़ी आगे नीचे ऊंची नीची चीज होती है तो लोग फिर नेपोटिज्म की बात करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो ट्रू है. यू नो वो आई थिंक अपने बलबूते पे ही आया है. पीएसएल में परफॉर्मेंसेस देखी हैं. लेकिन फिर ये कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है कि जब आप एक फेमस पर्सनालिटी के बच्चे हो कि यू नो थोड़ी सी अगर आपकी परफॉर्मेंस वीक होगी तो फिर लोग फिर बातें करेंगे. तो आई थिंक I've heard since he was in the Pakistan selection discussion a year ago that he's actually gained weight. I don't know if that's true or not, but my thing is, look, you wish him well as a human being. You want him to get on this journey and lose weight. It doesn't have to happen under the spotlight of being in the Pakistan team. I still think he's a massively talented player, but he's been given his opportunity. So let him sort himself out away from the team, and if he can get it together, come back, there'll be a place for him. ताकि वो ये है कि फिर हम वो भी स्टक ना हो ना कि उसको फिर आपने एज अ कीपर ही खिलाना है. उसके साथ दो मसले हैं ना. फिर आप उसको कीपर ही खिलाना पड़ता है और उसकी कीपिंग भी जो है थोड़ी बिलो पार थी. मुदस्सिर आप नेक्स्ट बंदे को रेट कर लें. द नेक्स्ट पर्सन इज द पर्सन जो आजकल लाइमलाइट में है बिकॉज ऑफ हिज फाइट विद अ फैन. हारिस रऊफ. हारिस रऊफ को कितने नंबर देंगे? I would give maybe एक मैच हरवा भी 4 out of 10 I guess. Yeah, I agree. आप कितने दे रहे हो? 5. Yeah, 4 or 5. You know that वो 12 out of 3 he should have been able to defend. Exactly. अगर वो मैच जितवा देता तो I would have given him 7. You look at all the other matches. I mean, that was horrible. You know, he should have defended that 100%. 3 for 21, 2 for 26, 1 for 17. He actually bowled okay in the other matches, but that USA match, you know, that's going to be our nightmare forever. We are out of World Cup because of that game, right? So yeah. उस वक्त तो मैच आपके हाथ में आ गया था. 12 out of 3. एक बॉल आपको बीट करनी है, एक बॉल. You know, and it's over. और अच्छी बॉल पे पड़े ना शॉट तो it's okay. I think वो फुल टॉस थी आखिरी बॉल जिस पे वो चौका पड़ गया था. फुल टॉस पे 6 पड़ी थी और लास्ट बॉल हाफ वॉली थी. हाफ वॉली थी. Yeah. उसने 2-3 बॉल
मुझे वो समझ नहीं आया कि शॉर्ट बॉल ट्राई नहीं की उसने। आपने वो देखा शॉर्ट होगा नहीं जब करे। साउथ अफ्रीका वाज डिफेंडिंग 2 अगेंस्ट नेपाल, तो उन्होंने 2 शॉर्ट बॉल्स कराई हैं, वो नहीं खेली गई उससे। तो आई डेंट सी हिम ट्राई एनी यॉर्कर्स। आई नो के सॉरी बाउंसर्स, बाउंसर में आई नो कि थोड़ा जान ज्यादा हो तो वो पीछे, रिजवान इतना टॉल नहीं है, उसका रिस्क होता है कि वो पीछे का बाई का रन ना हो जाए, Even बट उसका एटलीस्ट यू slow कुड हैव bouncer ट्राइड। एक था, which used to be very effective. या या इमाद वसीम को कितने नंबर देंगे आप? फिर उसका भी ये नहीं जी, प्रॉब्लम, हिज बॉलिंग स्टैट्स आर फाइन, मगर वो एक बैटिंग ओवर जो उसकी उसने जाया किया है, दैट्स, आई मीन इट माइट बी हिज वर्स्ट लाइक 5। मोमेंट ऑफ हिज एंटायर कैरियर। Yes. बॉल पे अक्सर पटेल का मुझे नहीं याद दिमाग, यार वो अगर आउट हो जाता ना उस पहले ही बॉल पे, तो शायद बेहतर तो होता। पीछे थे आमिर भी थोड़ा कर लेता, शाहीन भी, नसीम बाकी मार लेता है यार, नसीम मार तो लेता है, वो शाहीन मार लेता है। So, सब खेल लेते हैं। I तो mean, जो he जो chose, ओवर किए ना इमाद ने और इफ्तिखार ने, उसकी वजह से मैच yeah, उसकी वजह से मैच का सत्यानाश ही होगा। yeah, he chose the wrong time to have तो his अगर absolute बॉलिंग worst को innings देखें of his तो career. बॉलिंग में ही, हाँ Huh. क्या, तो bowling wise, I mean, he bowled really well. We can give him Yes. 7. या Yeah. अब That's अगर why I बॉलिंग gave अच्छी him थी। 5, because he's an yeah, all-rounder. Bowling may, you हम्म know, 0 for 17, 0 for 19, हाँ, 3 for 8. He did the job. And, you know, again, we know he's a capable batsman. He had his worst innings of his entire life in the wrong match. या So, you know, that's why he needs to be penalized. काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ द युवराज सिंह इनिंग जो उसने फाइनल में खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका। यू नो के आउट भी Hmm. नहीं हो रहा, लोग वो कह रहे हैं यार इससे तो आउट ही Huh. हो जाओ, यू नो। Huh. और वो जो एक ओवर था स्पिन बॉलर जो लगा हुआ था, अक्षर पटेल, और वो Josh, कट John मारे जा रहा Fulson. है। Yeah. ही Yeah. ट्राइड द कट शॉट 4 टाइम्स, Yep. 3 दफा बीट हुआ और चौथे पे एक रन लिया। Huh. दैट वाज अ किलर। वो आपकी रन रेट उस वक्त काफी मैनेजेबल थी। वो एक Yes. छक्का भी लग जाता है ना इस ओवर में, तो गेम That हमारे was हाथ like में the थी। Iftikhar maiden over in the finals. सॉरी। That was like the Iftikhar या maiden over in the बिल्कुल finals. बिल्कुल, हाँ So, वो चीजें याद रहेंगी। मोहम्मद आमिर, आई वुड गिव I हिम अ gave 6 him मे बी। 6. Yeah. 6 We have the 6। same. Yeah. या आमिर का That- मेन रोल बॉलिंग है, बॉलिंग उसने अच्छी कराई है, यू नो so, उसका जो रोल है उस हिसाब से आई थिंक इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स, So बारिंग I would have अगेन जो given सुपर him. ओवर का बहुत बुरा गया है। super over, उसने भी वो सुपर ओवर ना, So मैं I would have बताऊं, given him an ये 8. कंट्रीब्यूशन सबका Huh. है टीम में ना, मरवाने का किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। हाँ Wait, हाँ no, हाँ। no, no. I would have actually given him an 8. He is the highest wicket taker for Pakistan. I was counting. Granted, Naseem missed out a match, but that super over was just a disaster. And you know, I don't even blame them for giving him the super over, because the penultimate over, 19th over, he bowled a beautiful over, gave up 5 रन दिए थे खाली उसने। yeah, 5 runs. So I don't fault them for giving that over, but that for me that brings him down from an 8 to a 6. Otherwise, he was the highest wicket taker for Pakistan. नसीम द ड्रीम कितने नंबर देंगे? नसीम को मैं दूंगा क्योंकि ये 7, 7। I will give him more because of his passion, और जो उसने, या so I can even give him 9 just for overall या जो लड़का वो रोया ना इंडिया के fighting. मैच में, Yeah. उसने वो दिल जीत लिया है कि He यार, showed he cared. या Not उसके लिए just कितना Rone, मैटर करता। not just Rone. You have Iftikhar missing full tosses. Let's be clear, India did not bowl great. They had full tosses on the legs on 2 occasions that should have been 12 runs. It went for 1 leg by combined. You know, they could barely Yeah. John they were hitting the ball 2 feet, and Naseem ne aake do chauke mare. He scored 10 and 4 balls. So I mean, you know, you can do it. And then his emotion at the end, he was personifying all of our emotions. So yeah, I gave him वो 7, but जो he's उसका not gonna- माइंडसेट है ना, वो समहाउ ट्रिकल डाउन होके टीम में आ जाए। ये ना हो हाँ, कि जो बाकी टीम का जो मेंटालिटी है वो पास ऑन उस पे हो जाए। वी नीड समवन विद हिज तो, पैशन जो इस yeah, जज्बे के साथ खेले। मैं इसीलिए कह रहा था ना कि वो उस बेचारा अभी ही इज ओनली 21, तो कैप्टनसी तो बहुत दूर की बात है, मगर ही कैन बी अ वाइस कैप्टन टू yeah. ग्रूम लॉन्ग टर्म इन अ वाइड बॉल, पैशनेट गाय है, और ही इज लकी टू कि उसने 2-3 मैच फिनिश भी किए हैं। तो ऐसे लोगों को ऊपर लाना चाहिए, बजाय उसको ऊपर लाने उसको बाहर बिठा देते हैं। कमाल यार है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जब हम याद करते हैं ना, जो दैट्स, आप आमिर को याद करते हो राइट? और आमिर को इसलिए याद करते हो क्योंकि बैट्समैन ने अपना काम कर दिया था, Yeah. फिर आमिर ने स्ट्राइक कर लिया। ये गेम जो थी, दिस वाज अ गेम जो कि नसीम शाह को के लिए इंसान याद करता कि यार उसने आपके क्या नाम है, Victim, कोहली को आउट किया, और I इसके know. अलावा 2 और विकेट ली उसने, राइट? तो Yeah. बट अनफॉर्चुनेटली अब हाइलाइट्स तो हम वो देखेंगे, बट ओवरऑल बिग पिक्चर वी नो दैट वी लॉस्ट। तो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ भी ज्यादती हुई, द हाँ, बैट्समैन डिडंट डू जस्टिस। शादाब खान, नंबर कितने देंगे?
बस है। मैं एक यार वो टीम में क्यों था? तो इट्स नॉट एप्लीकेबल। मैं अंडा दे रहा मैं हूँ। उसको जो बैटिंग की थी उसने यूएसए गेम में, उसके लिए 1 नंबर दे दो। मगर वो Shadab बैटिंग is the only एक one for me who gets a different color, big green under. ये 0। ना Shadab Khan is टीम में the क्यों चाहिए? face of this failure, right? His bowling, एक तो कुछ लोग होते हैं, I say vomit bowling. I hate to say he is a tutty bowler. He is a crap bowler. I'm sorry. This guy should be nowhere near the team. He is like Hassan Ali. Okay. How do you consider him to be a number 4, number 5 batsman in these crucial chases? What kind of crap shots is he playing? I just think he needs a break from this team for a long time. And it's not going to happen, and that's sad. And he took उसको the piss उसको a एज lot. एज अ प्योर मिडिल ऑर्डर बैटर खिला रहे थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि बॉलिंग हाँ, अब रिलाई नहीं कर सकते, एंड ही इज नॉट अ मिडिल ऑर्डर बैटर, वी नो दैट, राइट? और yeah, शादाब और इमाद में से एक ही आपकी टीम में हो सकता है, और ऑब्वियसली इमाद इज द yes, ऑलराउंडर राइट नाउ इन टर्म्स yeah, ऑफ करंट फॉर्म। यार तो और दूसरा इमाद को क्रिटिसाइज लोग कर रहे हैं, मगर यार उसके स्टैट जो है ना इज मोर देन एन ऑलराउंडर। yeah. उसके जो स्टैट्स है ना, हम्म, प्रॉपर बॉलिंग बॉलर स्टैट्स। अगर कोई इतना अच्छी बॉलिंग इकोनॉमी आपको दे रहा है, ही कैन प्ले जस्ट एज अ हम्म, स्पिनर। उसने आउट भी किए। इनफैक्ट इमाद की जो बॉलिंग है सही ना, बात। मच इम्प्रूव। कि वो पहले आर्म बॉल करता था, वो एयर से अंदर आके ही कैन टेक इट आउट। और पहले उसका हैंडीकैप ये था कि मैं खुद बोलता था कि अगर वो पावर प्ले में अगर नहीं बॉल करा रहे तो उसको मत खिलाओ। ही वाज हॉरिबल इन द मिडिल इनिंग्स ना। अब ये हो रहा है कि बाबर उसको ओवर नहीं दे रहा पावर प्ले में। खैर हमारे बॉलिंग भी कंडीशन भी डिफरेंट थी, मगर ये Oh, कि दिस इज द बेस्ट आई हैव सीन हिम बॉलिंग थ्रू आउट द गेम। तो economical, so economical. बहुत और इकोनॉमिकल, विकेट भी ले रहा है। कंट्रोल भी था उसका, या Yeah. और इवन पावर प्ले बॉलिंग के भी अलावा स्लो। भी मिडिल ओवर्स भी उसने बहुत अच्छे कराए। एग्जैक्टली। उस्मान खान को कितने नंबर देंगे आप? Usman, ओके। 2 नंबर? एक? तो इस बेचारे एक को अच्छा, चलो उसने कोहली का कैच पकड़ लिया था, इतना मुश्किल कैच नहीं था, फिर कैचेस ड्रॉप किए उसने। जो मेन रोल है उसका एज अ बैटर, ही लुक क्वाइट आउट ऑफ सॉर्ट्स। इंडिया के खिलाफ भी बहुत डरा डरा लग रहा था। I'd said um, Shurumiki, I was questioning his technique. Look, हम्म, I'm glad he played his natural game, but his technique, he just wasn't suited for this. And he got the yeah. chance, he got the opportunities, and Someone just like didn't. Abdullah Shafiq might have वो been a better choice in Yeah, hindsight. we'll talk about the future some other day. Right now, I want या us सम to अदर डे। अभी ऑलरेडी हमारे को jump on the 50 मिनट की Pakistani हमारी एपिसोड players. हो चुकी है, Uh, तो ट्राइंग टू क्विकली वाइंड अप। फखर जमान, व्हाट द फखर? this is very अरे hard for me. यार ये तो 2 नंबर? नहीं, आई आज एग्री। कोई दो भी ज्यादा दे दिए, उसने तो कुछ किए नहीं फकड़ने यार। हम लोग So, so, यार he's Matt, somehow he's hiding from public criticism। yeah. उसका स्कोर क्या है यार? अब I आजम think I think बोल रहे हैं what हम what लोग। I find most frustrating about Fakhr is in the India match. He scored 13 and 8 balls. Everyone was struggling to score. He came and hit a 6 and a छक्का 4. मारा He उसने। was settled, and he was someone who, agar thoda sa he used his brain and stayed around a little bit, he could have led us to victory. He got out the same way he always gets out against Pandya, coming down the wicket and hitting a short delivery, and hitting it off the edge. So, when you are set and you are timing the ball, you've got to assume some responsibility. And so for me, Rizwan takes the biggest blame for that loss, but Fakhr is right there as well. As a senior या batsman, you've got to get the job done. You know? नहीं, उसके आप देखें उसने 4 मैचेस में स्कोर चेक जो है करो। वर्सेस यूएसए 11 of 7, वर्सेस इंडिया 13 of 8, वर्सेस कनाडा Yep. 4 of 6, And आयरलैंड के then five खिलाफ भी off नहीं चला। nine in this Ireland match. Yeah. या एंड ही बेसिकली ट्रिगर्ड द कोलैप्स। उसके बाद से Yeah. हमारी और ठीक वो शादाब भी गया, इमाद भी है। गया, तो आसिफ क्योंकि बेचारा थोड़ा मोटा है तो उसके पीछे सब लग जाते हैं। फकड़ छुप नजर नहीं आ रहा किसी हाँ, को। या नहीं, आप सही कह उस्मान रहे हैं। खान ये सब फ्लॉप हुए हैं यार, कोई नहीं चला सिवा बाबर सही है। अजम। मेरा ख्याल है एक दो और बंदे रह गए। शाहीन शाह अफरीदी, नंबर कितने देंगे आप? तो Shaheen batted actually, so Shaheen was good. I think I like Shaheen. I think I will give him 7 or 8 because आई of थिंक बॉलिंग वाइज भी हमारा प्रॉब्ली he was decent, yeah. बेस्ट बॉलर ही था एक तरह से देखा जाए तो। 6, 6? yeah. I या pulled him a या point back because of the dropped catch against USA. For me, he had two hands on it, and I think that was a big thing. You're right, though. He batted well both against Ireland and in USA ke khilaf. Otherwise, he was still a little bit more expensive than Amir and Haris, surprisingly. उसका आयरलैंड वाला तो मैंने खुद स्पेल देखा था यार, वो किस वो तो तरीके से that was उसने सिंगल zabardast. हैंडेडली जो Yeah. जबरदस्त, वो लगा था कि वापस आ गया वो शाहीन अफरीदी जो हम मिस कर रहे थे। हर कंडीशंस भी हाँ। काफी सूट यार करी थी उसको। वो मैच हारे आते भाई, वो शाहीन ने छक्के मार दिया आयरलैंड शाहीन के वाला। छक्के।
और जो और उसने शुरू में पावर प्ले में they were like 26 for 5 और और उसमें वो से वो large यूएस part because of शाहीन शाह Yeah. यूएसए वाले गेम में भी उसने दो छक्के मारे थे. He played मारे well थे. He finish also अच्छे was से. 0 for 33 though. He didn't take any wickets. Yeah. USA थोड़ी सी handled him अपनी very well. बैटिंग, थोड़ी सी अगर हम बैटिंग वो अपनी थोड़ी और डेवलप कर लेना वो, तो हमारे पास हम एक तरह से आप ऑलराउंडर उसको कंसिडर करना शुरू कर दें, तो फिर हमारी बैटिंग जो डेप्थ का भी मसला था हमें वो चीज़ वो ना हो कि अब हमारी टेल इतनी लंबी हमें लग रही थी बिकॉज क्या 6 डाउन के ऊपर आपका शाहीन शाह आ जाता है, हाँ. वो चीज़ हो जाती है. अच्छा, चाचा को कितने नंबर देंगे लास्ट प्लेयर, और उसके बाद अफरीदी, अब्बास अफरीदी की भी बात करें. चाचा 3 या आई वुड गिव हिम 2 मे बी. 3 ज्यादा दे दिया आसिफ भाई. उसने मेरा तो देखो उसके 90 T20 हो गए हैं. खैर चाचा को इन्होंने यूज भी इंडिया वाले गेम में ही शुड हैव बैटेड अबव इमाद एंड शादाब क्योंकि So पिच this is खराब where I थी. give him benefit of doubt. या Position. यार उस बीच अब वो ये ना उसको बॉल देते थे उसको. Yeah. पिछले वर्ल्ड कप में ही वाज बैटिंग एट नंबर 4. ठीक है. इंडिया के खिलाफ ही स्कोर्ड 50 और ही हिट 362 अक्सर. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलैप्स में ही सपोर्ट मतलब ही स्कोर्ड 50 विद शादाब. उसको चांस नहीं दिया. मगर अब मेरा डिफरेंट टेक हो गया. उसकी फील्डिंग बहुत खराब हो गई है और जिस तरह फुल टॉस से कर रहे हैं ना मिस, मुझे लगता है कि उसका टाइम आ गया है. आई थिंक वी नीड अब समबडी. वाकई वो चाचा बन गया है, पहले तो हम अब छेड़ चाचा वो करते थे ना, अब बन वाकई गया है चाचा बन और गया वो लगता है. हाँ उसको 90 आई थिंक वी हैड अ गुड टाइम विद हिम. ही प्लेड 19 गेम्स. आई थिंक उसको वो आई थिंक ही विल दे विल ट्राई समबडी न्यू. सो वही है मसला कि अभी अभी करंट उसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं. आसिफ हाँ नहीं है, हाँ खुशदिल शाह है, हैदर Yeah. अली है, सो विल टॉक अबाउट वो हम अदर बाद में बात ऑप्शंस. करेंगे. मगर सिलेक्शन इसीलिए हुई थी आजम और इफ्तिखार की क्योंकि यही लोग नजर आ रहे फिक्स थे सेटिंग के लिए. हाँ और सही लीग्स में. बात है. तो वो मसला नहीं है कोई. अच्छा, अब्बास अफरीदी को हमने आखिरी गेम में देखा. हाँ. कितने नंबर देंगे उस परफॉर्मेंस के बैटिंग बेसिस पे? बॉल आई मीन ही वाज गुड. या बैटिंग तो उसने काफी अच्छी की. या बॉलिंग वाज ओके. बॉलिंग Bowling वाज डिसेंट, zero नॉट दैट. zero 3 overs 0 wickets for 31. या थोड़ा Batting, एक्सपेंसिव था. but this partnership is match winning with Babar. दैट वाज अ मैच He विनिंग पार्टनरशिप. he मैच saved विनिंग Babar's पार्ट skin. Yeah, तो Let's be ये honest. तो यार इसको हाँ. 6 7 तो दे यार. अपने तो 5 दे. नहीं अच्छा 5 से अच्छा मतलब बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग खराब थी. आई थिंक वो बड़ी स्मार्ट मूव की थी कि उन्होंने अब्बास को अहेड ऑफ शाहीन भेज दिया था. हाँ. बिकॉज शाहीन को आप रिलाई नहीं कर सकते लंबी पार्टनरशिप के लिए. शाहीन का हिट और मिस ही है अपने फादर लॉ की तरह, 2 छक्के मारेगा वो बोल्ड हो जाएगा. हाँ. यू नो सो अब्बास का वो था कि उसने बहुत क्लेवरली शुरू में टुक टुक किया है, सिंगल्स लिए हैं, ही प्रोलॉन्ग द गेम. एंड में आके उसने फिर 1-2 छक्के मारे हैं. तूने तो I heard कि he can bat. मुझे याद नहीं मैंने उसे कब देखा है मगर PSL में एक आध मैच में अच्छा खेल रहा था. एक आध मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर, जो कि ऑलमोस्ट लाहौर कलंदर शुड हैव वन इजीली, एंड के अंदर इसने छक्के मार के गेम जो है ऑलमोस्ट मुल्तान सुल्तान के फेवर में ले गया था. ये फाइनल गेम थी. That's good. सो या ही कैन बैट, जिस तरह इनके अंकल भी बैट करते थे. उमर गुल का भी यही था ना कि उसने साउथ हाँ अफ्रीका के अगेंस्ट वर्ल्ड हाँ कप वो के तो गेम के खैर. अंदर 2 छक्के मार दिए थे, 2-3. तो या इसको भी थोड़ा डेवलप करना चाहिए. चले जी, ओवरऑल हमने आज काफी कुछ लंबी एपिसोड भी हो गई. होप कि आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी. उम्मीद तो थी कि कुछ एक पॉजिटिव न्यूज के साथ हम बात करते तो ज़ाहिर है खुद भी हम खुश होते, आप भी खुश होते. बट अगेन ये कॉन्वर्सेशन भी करनी जरूरी है. इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव दिस हार्ड Catharsis. कॉन्वर्सेशन बिकॉज एग्जैक्टली ये, क्योंकि अगेन दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आई मीन दिस इज ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आते हैं. उम्मीद ये है कि इसके बाद हमारा कुछ ऊपर जाने का सफर शुरू हो. अगेन रिमेंबर इंग्लैंड लास्ट टाइम ऑल्दो दे वर द डिफेंडिंग चैंपियंस इन द ओडीआई, कितनी बुरी उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन अब दे मूव पास दैट एंड अगेन सुपर 8 के अंदर चले गए हैं. दे आर प्लेइंग वेल. तो उम्मीद यही है कि ठीक है हमारे पिछला 6 महीने साल अच्छा नहीं गया, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखें. प्लेयर्स के अंदर जो सिलेक्शन के अंदर जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें, कैप्टनसी के अंदर जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें, एंड वी स्टार्ट विनिंग. फिर जब हम वो जीतेंगे तो जाहिर है फैंस भी उनके साथ और ज्यादा खुश होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे. तो You इसी know के what? साथ You know what our जी next cricket assignment is? जी जी It what is is it? we play T20s and one day internationals in Australia and South Africa. So it may be the end of the world then. But I don't know. I mean, Yeah. और नहीं, ये मेरे एक और लिए इतना वो मैटर नहीं करता. अगेन आई सी दिस एज प्रेपरेशन फॉर द बिग टूर्नामेंट्स. मेरे Yeah. लिए वो एक बेशक और हार जाओ, ये मैचेस ना हारो, रादर देन द अदर वे अराउंड, कि वो अगर आप Yeah. जीत भी जाओ लेकिन यहाँ के गन मार दो, मुझे उससे मसला होता है. Hmm. तो तो न्यूजीलैंड की तुम टीम देखो पेपर पे इट वाज अ रियली गुड टीम मगर वो भी तो बाहर हो गए ना. फिर सम ऑफ देम आर रिटायरिंग. मुझे लगता है That's the राइट राइट Pakistan effect.
बोल्ट रिटायर हो गया, केन तो विलियमसन ने सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने रिन्यू नहीं करवाया। एग्जैक्टली, तो न्यूजीलैंड भी अनलकीला, श्रीलंका भी इतनी बुरी टीम नहीं थी कि वो दूसरी टीमें पहुंच गई, तो कुछ वो टीम अनलकी रही। हमारा लक से ज्यादा वी आर एट फॉल्ट, क्योंकि वी कीप डूइंग द सेम, रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। हमारे पास टाइम था, हमने एशिया कप में डिजास्टर हुआ है, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप में, एंड इट्स लाइक इंसैनिटी, राइट, कि हम एक ही चीज करे जा रहे हैं। लेट्स, आई थिंक वी शुड डू अनदर एपिसोड लेटर के व्हाट कैन बी डन। Who do you want to see अच्छा, win the अपनी whole thing? प्रिडिक्शन कर लेते हैं, प्रिडिक्शन, हु इज विनिंग? आई एम गोइंग फॉर वेस्ट इंडीज। यार आप बताएं। Is this who you want to win or who will win? चलें दोनों अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। आई वांट talking वेस्ट about इंडीज टू final? विन एंड आई प्रिडिक्ट दैट, मेरे लिए दोनों वही हैं, प्रिडिक्शन भी और दिल भी मेरा उन्हीं के साथ है। आप बताएं। भाई, I want Afghanistan to win. I think India will win. if I'm betting money, Australia is winning, मगर ये कि I want West Indies to win. अच्छा, मैं पैसे हमेशा अपने दिमाग को लगाता हूँ, पता है ना। आसिफ आप अफगानिस्तान को सपोर्ट करें? अफगानिस्तान की तो पाकिस्तान के साथ काफी राइवलरी होती रहती है। I know, but they're a fun team. You know, look, I'm removing Pakistan from the equation. They're not worthy of our support right now. 56 Look, विदाउट लॉस है वेस्ट इंडीज अभी राइट नाउ। I have my Bangladesh Or- roots as well, but Afghanistan is a team that I would really love to see win. It would really shake things up, and it would be नहीं, fun to उनके see. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट काफी मजा आया था उनको देख के, उनकी बॉलिंग भी अच्छी जा रही है। But I think the stars are aligning for India. जी 57 for 0 and 6.2 overs, 6.3 overs, so Yeah. वेस्ट इंडीज तो अभी तो स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, एंड अगेन होम एडवांटेज है। Yeah. बट आई थिंक सेमीफाइनलिस्ट तो एटलीस्ट हम क्लियरली बता सकते हैं कि इंडिया की साइड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सीम टू बी क्लियर फेवरेट्स अनलेस अफगानिस्तान पुल्स ऑफ। भाई, अगर सीधी सी बात है, अगर वेस्ट इंडीज नहीं जीतता तो मजा नहीं आएगा। अब कोई भी जीतो उसके बाद। Yeah, वेस्ट Afghanistan. इंडीज का जो वेस्ट इंडीज अगर अफगानिस्तान, नहीं जीतता ये वर्ल्ड कप तो बट मजा नहीं। अफगानिस्तान रियलिस्टिक, आई डोंट नो, आई मीन जिस तरह वो हारे अफगानिस्तान हैं की कल वेस्ट अफगानिस्तान इंडीज know. से। जीतता, अफगानिस्तान की बैटिंग ही नहीं है यार, ओपनर अफगानिस्तान के चांस नहीं है। They can do an upset. Yeah, West Indies would be very refreshing to see. I agree. Yeah, Yeah, especially West और आप not to forget, West Indies did not even qualify for the Yeah. last World Cup. Yeah. तो अगेन जो हमारे फैंस को पर्सपेक्टिव देने के लिए इतना डिसहार्टन भी ना हो, ठीक है, अगर हम सब उन्होंने- डिसहार्टन है, लेकिन नहीं, वो भी मगर पर्सपेक्टिव उन्होंने- देखें। फर्क ये वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में कि हम एक ही टीम जो पिटे जा रही है उससे खिला रहे हैं 2 साल से। तो वेस्ट इंडीज की पूरी टीम काफी चेंज है, उनकी बॉलिंग सॉलिड है, हाँ, गुड 2 स्पिनर्स, नहीं चेंजेस तो होने चाहिए। यंग लोग हैं, और बैटिंग में तुम देखो दे हैव पावर हिटर्स टिल 10, उनके जो बॉलर हैं दे कैन हिट लाइक और अभी तो सुनील नारायण को नहीं रखा, सुनील नारायण ने हाँ। आईपीएल के अंदर मार के एज अ बैट्समैन भी बहुत जबरदस्त कर दिया हुआ था। एक चले इस पे सुनील नारायण की बात कर रहे हो ना, उसने कहा था कि दीज टू आर यंग लेफ्ट आर्मर्स, वो जो है अकील हुसैन और जो मोती है, तो सुनील ने कहा कि आई हैव सो आई डोंट वांट टू आई वांट यंग प्लेयर्स टू प्ले दिस वर्ल्ड कप, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, चलें देखते हैं, तो चलें, मे द बेस्ट टीम विन एंड मे द बेस्ट टीम नॉट बी इंडिया। तो India. चलें जी, इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। दोबारा आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।